It is already pointed out that gene activation can be mediated by a simple cooperative binding. The activator interacts simultaneously with DNA and with polymerase and so recruits the enzyme to the promoter. How activation can be mediated by allosteric events? An activator interacts with polymerase already bound to the promoter, and by inducing a conformational change in the enzyme or the promoter stimulates transcription initiation. Both cooperative binding and allostery have additional roles in gene regulation. For example, groups of regulators can bind DNA cooperatively. Two or more activators and or repressors interact with each other and with DNA and thereby help each other bind near a gene they all regulate. This kind of interaction can produce sensitive switches that allow a gene to go from completely off to fully on in response to only small changes in the environment. Cooperative binding of activators can also serve to integrate signals. For example, some genes are activated only when multiple signals and thus multiple regulators are simultaneously present. A particularly striking and well understood example of cooperativity in gene regulation is provided by bacteriophage lambda. Allostery is not only a mechanism of gene activation but also often the way regulators are controlled by their specific signals. Thus, a typical bacterial regulator can adopt two conformations. In one, it can bind to DNA, and in the other, it cannot bind to the DNA. Binding of a signal molecule locks the regulatory protein in one or another conformation, thereby determining whether or not it can act. So the conformation जो है उसकी एक या दूसरी conformation, वो conformation decide करेगी कि उसने act करना है या नहीं. The bulk of gene regulation takes place at the initiation of transcription. तो ज़्यादातर genes जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का जो स्टेप है वहां पे ही रेगुलेट हो जाते हैं. दिस इज ट्रू इन यूकैरियोट्स जस्ट एज इट इज इन बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी ऐसे ही रेगुलेशन होती है. बट रेगुलेशन इज सर्टनली नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दैट स्टेप इन आइदर केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यानी कि ये जरूरी नहीं है कि रेगुलेशन जो है वो इनिशिएशन स्टेप पे ही हो, बल्कि दूसरे स्टेप्स जो हैं उन पे भी रेगुलेशन जो है वो हो सकती है. इन बैक्टीरिया जीन रेगुलेशन आल्सो अकर्स एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन एंड इवन एट ट्रांसलेशनल लेवल. यानी कि जब ट्रांसलेशन हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन सारी हो गई और फिर जब ट्रांसलेशन हो रही होती है यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, उस स्टेज पे भी जीन रेगुलेशन हो सकती है, हालांकि जीन जो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो चुकी है. There are also cases involving regulation by RNAs. For example, attenuation, riboswitches and small RNAs. They all regulate gene expression.